Very good evening to all of you. Respected General Secretary of the Trust, Dr. 𝗙𝗂𝗀𝗃𝗀𝗃, my very old friend, Brigadier 𝗚𝗵𝗶𝗲𝗃, faculty colleagues from this esteemed institution, ever energetic, ever smiling, tirelessly working set of students. It's my privilege to be here. I remember around 6 years ago I came for such event, and after that I am again here. At the outset, let me congratulate the entire institution and the organizing team for continuing the momentum of the events. If there is an honest effort, you get a result. And the way, the moment I came in the campus, and since then I am seeing the different dimension of the event, that shows that how successfully you have passed your 2 days. And that's how a great poet said, जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल तो पा ही लेते हैं। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल तो पा ही लेते हैं, क्योंकि अच्छे मुसाफिर का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। When you interact with people in and around, people keep asking now that today is the digital age, everything is going virtual and digital. What is the purpose of having such event in the institution where people travel from different parts of the country, different locations, and then interact? I keep replying to them and will inform to you also that yes, in today's advanced stage, when everything has become digital, I do not know when will be that day then we can download our food from some web portal. I saw at one place it was written that the technology will fascinate me if I can download my food. But in this advancement of the digital technologies, yes, it is possible that one computer will do the job of 1,000 many people put together. But despite that, 1,000 many computers put together is not capable of doing the job of one extraordinary person, and conducting such events are basically to serve that purpose, that you invite extraordinary people, have deliberations, and see to it that how and in which way we have to transform ourselves, we have to change ourselves to the kind of the changes with the ecosystem, with the entire industry, with the entire marketplace is having. So, on this a great poet has said that this spirit of organizing such program must continue in future as well, with great momentum, with more strength, and that's how a poet says that आशियाने से बढ़कर है फिक्रे चमन। आशियाना घर को कहते हैं, तो कहते हैं घर तो हम बना लेंगे बाद में, पहले ये जो मोमेंटम है सोसाइटी के लिए, ये जो मोमेंटम है इकोसिस्टम में साथ चलने के लिए, ये बना रहे। तो पोएट की जबान में कहते हैं कि आशियाने से बढ़कर है फिक्रे चमन, आशियाना तो फिर बना लेंगे हम, एक उम्मीद की लौ सलामत रहे, 100 दिए इस दिए से जला देंगे। So continue your momentum. It is not easy task to organize an event. You ask to the organizers, and particularly those who are under the core working team, they will tell you how much efforts are required. It's a huge effort. Friends, the kind of the topic which you have selected is again very innovative, very novel, very creative. Under the backdrop of innovation, creativity, doing something new, if we keep on compromising with the resources which are available before us, probably a decade down the line, or maybe 2 decades after that, there won't be resources available. When I'm talking of resources, all type of resources which you can visualize for our next generation. So the innovation, creativity, and the skill lies in that, how can we excel, how can we do the best possible thing, considering and understanding that we are not going to consume, we are not going to exhaust the resources which will be needed by my future generations. So if you pay attention to that aspect, that what you have kept green market or green computing. So how to ensure that without compromising on the resources which will be available for
for my next generation I can keep on doing well, keep on excelling and keep on innovating. That's the purpose basically, and it's a very active team. So a big round of applause for the entire organizing team who kept such an act possible. To me as a student, look, every teacher is a student. So to me as a student, I personally believe that there is nothing constant on this earth except change. How many of you believe, or how many of you are with me that yes, change is the only constant phenomenon on this earth? Those who do not believe will believe after this story. Whatever you see in and around us, keep changing. And that's how I tell people that if you do not change upfront, the market competition, the pressures, the ecosystem which is changing around you will change you. And that's how it is said that, how many of you know that there was a company known as Nokia had a very robust feature phone a decade ago? There was a company. And how many of you have now Nokia feature phone? Hardly one or two. You know, had I asked this question 10 years ago in a similar hall, how many of the audience would have replied me in yes? More than 80%. That was the kind of penetration of that phone. That was the kind of robustness of that product. That was the kind of the customer loyalty and the brand value of that product. And there went Nokia wrong. Didn't realize the change which was happening on technology front. So if we are not adaptive, if we are not accepting changes upfront, forget about being leaders, we will not even remain followers. Now Nokia has got all those products in their product profiling, which any other company have got in a smartphone, but will never be able to get that share which Nokia had at that particular moment. So this implies we need to be ready for changes up front, and such kind of events in which people will be from different parts of the country and other institutions will help you to understand what are the changes happening in the society, and in which way you will be ready to accept those changes, so that you should always be relevant and not become redundant. And that's how we claim that when we speak of changes, what we understand, अगर एक इंस्टीट्यूशन है तो स्टूडेंट आज का जनरेशन का ये हमारे स्टूडेंट समझते हैं, वो आर वेरी इनोवेटिव, वेरी क्रिएटिव, वेरी हार्ड वर्किंग, समझते हैं ये टीचर सब सारे पुराने जनरेशन के, इनको बदलना चाहिए. टीचर से बात करें तो वो सोचते हैं वो डायरेक्टर सर और मैनेजमेंट बदल जानी चाहिए, उनके अंदर चेंजेस आना चाहिए, वो अपने को चेंज नहीं कर रहे. दे आर नॉट एडाप्टिंग टू द चेंजेस व्हिच आर हैपनिंग इन डिजिटल एनवायरनमेंट. घर में बात करें तो बच्चा कहता है कि मेरे मदर और फादर तो बिल्कुल पुरानी जनरेशन के हैं, नई चीजें नहीं है. मदर और फादर को आप पूछें तो कहेंगे बच्चे बिल्कुल बदल गए. आप सोसाइटी में बात करें तो एवरीवन विल कीप ऑन ब्लेमिंग ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस दैट दीस आर एब्सोल्यूट हैव गॉट नो रोल इन चेंजिंग एनवायरनमेंट. और गवर्नमेंट को पूछो तो वो कहेंगे कि हमारे सिटीजंस नहीं चेंजेस को अडॉप्ट कर रहे. फ्रेंड्स, ये ऐसा सिंड्रोम है जिसके लिए ग्रेट पोएट ने कहा कि इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है. चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ मार्केट डायनामिक्स. इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, सब बदलते हैं ना, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि हम खुद को नहीं बदलते. एंड दैट्स हाउ गालिब सेड दैट उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, भूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा. तो 21st सेंचुरी का इंडस्ट्री 4.0 डिजिटल वर्ल्ड हमें ये सिखाता है कि हम आईना साफ नहीं करेंगे, हम में से हर इंडिविजुअल, हम में से हर इंसान अपने को बदलेगा. और जब हम अपने को बदलेंगे तो मार्केट हमारे लिए होगी, जो प्रोफेशन है वो हमारे लिए होगा, सोसाइटी को हम एक्सेप्टेबल होंगे और सोसाइटी हमें एक्सेप्टेबल होगी. Having said that, friends, on the technological aspect, yesterday you had national conference and you might have the deliberations on different aspects. Let me tell you, I gave you one example how technologically Nokia had the 80% plus market share and now have no share. See, a very simple software which almost 10 years ago was having no presence, IBM Watson. In last 10 years, the kind of the changes which has happened has gone to that extent that one software can help a housewife in the kitchen to understand how to cook a delicious food,
Then on the same software on the other end can help a lawyer to plan and prepare for a case and present it to court. The same IBM Watson can help medical professional to understand, diagnose the patient and understand how to treat the patient, and at the same time the software can help a town planner and architect to plan and design the biggest smart city. That's the kind of applicability and diversity we are expecting in today's world. It is expected that by the year 2025, a small robo for farmers, for agriculture, where sustainability is very important now, otherwise we'll be having no food. So a small robot, maybe of $100 by 2025, will be capable of doing everything which farmers are at this moment doing on the playfield. So the farmers will become the managers of their playfield, and the robot will be doing the job of the farming as per the instruction of that manager. That's the kind of changes which are expected in 21st century market. What's more important in 21st century market, which people have coined as Industry 4.0, that almost in Industry 3.0, the technology used to follow the business model. मेरी business strategy क्या है? Technology उस business strategy के लिए कैसे customize की जाएगी? ये challenge हुआ करता था Industry 3.0. लेकिन जो अब डिजिटल वर्ल्ड है हमारे सामने 21st सेंचुरी का इंडस्ट्री 4.0, जिसको आपने बहुत इंटेलिजेंटली ग्रीन मार्केट का प्लेस रखा है इनोवेशंस के साथ, इंडस्ट्री 4.0 में चैलेंज हमारे लिए ये होगा कि हाउ टू इंश्योर दैट माय बिजनेस मॉडल, माय बिजनेस स्ट्रेटजी विल फॉलो द टेक्नोलॉजी. आप इमेजिन करें कि आप 15-20 साल पहले किसी ने सोचा होगा कि काली पीली टैक्सी खत्म हो जाएगी एंड जीपीएस इनेबल, सॉफ्टवेयर इनेबल एक स्मॉल एप्लीकेशन ओला एंड उबर को इतना सक्सेसफुल बनाएगा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट मेनी ऑफ सच बिजनेस प्रोवाइडर और सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैव गॉट नो एसेट टू देमसेल्फ. तो ये डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और इन जनरल डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजीज इन 21st century will create that much impact no one knew. But what is happening, my friends, because many of you are students young, and when I see the kind of the habits of using technology, मुझे ऐसा लगता है कि जब इंट्रैक्शन का मौका मिले आपको बताना चाहिए कि use technology in a judicious way, in such a way that you have upper hand on the technology and keep controlling the technology. Not like that, that technology should get an upper hand on we human being and start controlling us. For example, I will give you understanding. When we were at our 20s, around 30 years ago, I personally had the habit of writing diaries. हमारी confidential personal diaries हुआ करती थी, और अगर कभी किसी ने भूले से भी पढ़ लिया बिना पूछे, so we used to become mad. How dare you can read my diary? Is it or not? People of my generation will do. But what is happening with the help of technology now? तो हम चीजों को प्राइवेसी मेंटेन किया करते थे. आज तो बड़ी बातें हो रही. Many developed nations have come forward for data privacy, the citizens privacy. Huge debate world में हो रही है कि because of technological penetration, privacy is being encroached. And particularly country like India, हम ये भी discussions कर रहे हैं कि जो बहुत सारे service provider हैं, say for example banks, say for example different kind of other government agencies are leaking our data and our privacy is being compromised. लेकिन आप उस प्राइवेसी का क्या करेंगे कि हमारी जनरेशन के लोग, people used to become mad if someone reads my diary, but now in today's time, if you have something such kind of fascinating information, you put it on your Facebook, and if no one gives like, लोग पढ़ते हैं, सोचते हैं इनका पर्सनल मैटर है, मैं क्यों इस पे कुछ लाइक करूं. अगर लोग 1-2 दिन गुजर गया और लाइक नहीं देते, तो आप दूसरा पोस्ट करते हैं कि all of you are sleeping or what, no likes. People used to become mad if no one likes, no one reads and appreciates. And the side effect of this habit of using technology is that कि आपने देखा होगा कि आप मनाली का ट्रिप बनाते हैं, अपने घर से निकलते हैं, निकलने से पहले 15 दिन 20 दिन पहले जब आपका ट्रिप प्लान हो जाता, तो आप फेसबुक पे अपडेट करते हैं या किसी सोशल नेटवर्क पे अपडेट करते हैं, maybe for your friends information, during so and so days, during so and so period, I will be at Manali, and in between I will stop here, I will stop here, I will have breakfast here, I will have lunch here, I will have dinner there, and then after, when you reach at Manali and start taking your dinner, there are thieves.
who come at your home and start taking dinner at your home. When you are enjoying at Manali after dinner, the thieves start enjoying at your home and take away all your belongings from your home. So see to understand how are we using technology. Whether we are using technology or we are being used by the technology. So let's use technology in a judicious way. Otherwise those days are not far away when the basic understanding of the human philosophy will not exist and possibly we will become slave for the technology. But being away from the technology is also not a solution. So etiquettes of using technology is very important, and when I am talking of etiquettes of using technology is also addressing the concerns of the green market and the sustainable computing, the green computing. Because once you understand what is right, what is wrong, you are addressing the concerns of green computing, you are addressing the concerns of digital age. The next important aspect is, just in the race of coping up with the changes and become technocrat or become tech savvy, please understand, now almost all corporates in Industry 4.0 have started claiming that the attributes like teamwork, attributes like communication is lacking in the young people who are joining us as a strength in our workforce. So we need to consider those particular attributes, and that's how it is said that such kind of events are very important occasions when you get enough opportunity, ample mechanism to polish your teamwork, polish your communication skills. And I personally, as a student of computer science, tell people that there are 5 fundamental attributes which young people, which students must find an opportunity, explore an opportunity, how to polish them, and the first attribute amongst them for 21st century professional skill is your domain knowledge. From whichever discipline you are, even if you are a law student, you are a journalism student, you are a management student, you are a computer science student or engineering student, from whichever discipline you are, understand you should be proficient in your chosen domain of specialization. When a problem is being given to you, you should be in a position to apply your knowledge, apply your skills and give a solution to the problem is the first fundamental skill. And of course, to that respect, the classroom inputs are sufficient enough and all the colleges undertake, and this particular college in last 4 or 5 years have taken extensive effort in this direction. The second important skill in 21st century for Industry 4.0 kind of environment is good. Ability to work in a team. And when I'm talking of ability to work in a team, is very important aspect. As a teacher, when I ask my 10 students to work in one team and develop one project and deliver me the solution maybe in a month's time, so all 10 students will say yes. But after a week time, 7-8 students out of the 10 will come and tell me, sir वो 2 बच्चे हैं ना हमारी जो प्रोजेक्ट टीम आपने बनाई है, उनको निकाल दीजिए, बाकी हम सब मिलके हम 8 मिलके सारा काम कर लेंगे. आप उनको पूछे बेटा ये मुझे पता है कि आप 5 भी कर सकते हो, 8 तो बड़ी बात है, लेकिन मैं वो 2 बच्चों को भी इंस्पायर करना चाहता हूँ कि आप लोग उन्हें इंस्पायर कीजिए, उन्हें भी सिखाएं, उन्हें भी लर्न कराएं, टुमारो दे में लीड ए टीम. तो बच्चे कहते हैं नहीं सर आपको पता नहीं ना, उनका वेवलेंथ अलग है, हमारा वेवलेंथ अलग है. हाउ कैन वी कोएग्जिस्ट? फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू अपफ्रंट, व्हेन यू विल गो टू द मार्केट यू विल नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू सेलेक्ट योर टीममेट्स. तो मैं उन्हें कहना पड़ता है कि नहीं ऐसा है कि टीम में काम करना बहुत जरूरी है. फिर बच्चे कहते हैं अगर कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं तो वो कंप्यूटर साइंस के हिसाब से, नहीं तो मैथमेटिक्स तो इतनी सबको आती है, सेट थ्योरी सबने पढ़ी है. वो कहते हैं सर आपने क्लास में पढ़ाया था 0 और 1 ऑन और ऑफ होता है. हमने सेट थ्योरी में पढ़ा था कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 डिसजॉइंट सेट इज 5. वो 2 अलग फिलॉसफी, मेरी फिलॉसफी अलग, मेरे वेवलेंथ अलग, उनके वेवलेंथ अलग. 2 डिसजॉइंट सेट को आप कह रहे हैं इकट्ठे काम करने के लिए इंटरसेक्शन 5 होता है, कुछ भी नहीं होगा. फिर मुझे लगता हो यस, अब तो इन्होंने 4th जनरेशन कंप्यूटिंग लॉजिक लगाया, मैथमेटिक्स लगाया, तो मुझे कुछ तो इनको लॉजिक बताना पड़ेगा. तो मैं कहता हूं अच्छा बेटा ये बताओ, वी आर प्राउड ऑफ रिच इंडियन ट्रेडिशंस. दुल्हन अपने घर से, अपने मायके से ससुराल शादी के दिन जब रुखसती होती है तो वो रोते जाती है. इज दैट ए हैप्पी मोमेंट फॉर हर और इज दैट ए सैड मोमेंट? सब सोच रहे हैं कि मैं तो क्या कहने आया था सर, क्या एग्जांपल दे रहे. बट वो फिर मैं कहता हूं नहीं, दिस एग्जांपल हैज गॉट रेलेवेंस. रिप्लाई मी, इज दैट ए सैड मोमेंट और इज दैट ए हैप्पी मोमेंट? तो कुछ बच्चे कहेंगे सैड, कुछ बच्चे कहते हैं हैप्पी. एक इंटेलिजेंट बच्चा उसमें से कहता है कि सर बहुत, जैसे ही वो कहता बहुत, मैं कहता बस अब रुक जाओ. फिर मैं से कहता हूं नाउ अप्लाई योर 10th स्टैंडर्ड सेट थ्योरी. कलेक्ट all elements
from this universe which are happy element, put it in happy set, H. Collect all elements from this universe which are sad, otherwise by virtue of not being happy, rest of the elements are sad. So put it in S, sad set. Find intersection happy, intersection sad. What will you get? 5. But the दुल्हन exists there. दुल्हन exist करती है. Mathematics कह रहा है कि 5 है. So can you deny the existence of a real world object which is just before you? जो चीजें हम खुली आंखों से देख रहे हैं उसे क्या हम एक मैथमेटिकल लॉजिक की वजह से मना कर दे? तो नहीं. इसका मतलब आंसर ये है कि जो हमारी फोर्थ जनरेशन लॉजिक है वो हमारी रियल टाइम प्रॉब्लम्स को, हमारी रियल लाइफ के इश्यूज को बहुत बार नहीं एड्रेस करती है. इसलिए कंप्यूटर साइंटिस्ट ने कहा कि भाई फोर्थ जनरेशन लॉजिक बहुत लिमिटेड है और हमें फिफ्थ जनरेशन लॉजिक में बिलीव करनी है 21st सेंचुरी की. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फजी लॉजिक. और फजी लॉजिक कहता है कि हैप्पी एंड सैड कैन बिकम टुगेदर. At the same moment I am happy, at the same moment I am sad, at the same moment it is hot, at the same moment it is cold, and that is what is possible on fuzzy scale. And that's how a great poet says, सीधा साधा डाकिया जादू करे महान. डाकिया सब लोग समझते हैं, कुरियर वाला समझ ले, या पोस्टमैन कम आता है, कुरियर वाला हमेशा आता है. सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान. आंसू सैड है, मुस्कान हैप्पी है. हैप्पी और सैड को एग्जिस्ट करता है. तो हमारे 10 बच्चे एक टीम में क्यों नहीं काम कर सकते? And the third important skill is your ability to communicate well, and that's how the great management philosophers in the world have proven it experimentally, has proven it scientifically, that even a technically sound proposal, if not presented nicely, likely to get rejected, and a technically poor proposal, if presented nicely, likely to get accepted. That's the power of your presentation, that's the power of your communication. So be good at your communication. And that's how the quick example. Board exams are coming. There were few friends who thought, let's go for prayer in a church because next Monday onwards board exams are coming. So 5 of them went to a church for making prayer on a Sunday. And they realized the church atmosphere is very good, very encouraging. So they planned that let's have prayer for next Sunday also, this Sunday itself. So 4-5 hours of prayer. And in between that, one of the member of the team had a poor habit of smoking. So जब 2-3 घंटे गुजर गए, so he took out his cigarette and started smoking right in the prayer hall. अच्छा, आप में से कितने लोग लोटस टेम्पल घूम के आए? Oh, good numbers, हाँ? जाते रहिए, घूमना भी चाहिए. लोटस टेम्पल में अगर जोर जोर से बोले तो क्या होता है? एक तो इको, और दूसरा कोई तो वॉलंटियर आता है एडमिन डिपार्टमेंट से, कहता है प्लीज गेट आउट. स्पीकिंग है, स्पीकिंग, शाउटिंग, टॉकिंग इज नॉट अलाउड. तो द मोमेंट ही स्टार्टेड स्मोकिंग इन द चर्च, पहले तो जो उसके फ्रेंड, दूसरे 4 फ्रेंड्स थे, उनमें से एक बच्चा बहुत पॉजिटिव था. उसने क्या कर रहे हो, इतने सारे बोर्ड्स लगे हैं यहाँ, नो स्मोकिंग. फिर आप तुम स्मोक कर रहे हो? तो ये कॉलेज थोड़ी है, सारे इंस्ट्रक्शन सुने जाते हैं. ये यहाँ है, let me smoke. So immediately a poor person from the admin department came and he said, "Oh shit, you are smoking, get out." अच्छा, ये लिबर्टी तो सिर्फ टीचर्स को है, अभी भी है कि अगर बच्चे को क्लास में कह दिया गेट आउट तो आप मजबूरी है, जाना ही पड़ता है बच्चे को बाहर. भले वो बाद में जितनी गालियां देता रहे, पूछता रहे क्यों है. इसलिए मैं टीचर्स को समझाता हूँ गेट आउट तो करो, लेकिन बाहर क्लास खत्म करके उसको बुलाना बच्चे को जरूर, ताकि वो कनेक्टेड रहे तुम्हारी क्लास से अगले लेक्चर में. नहीं तो वो अगले बार ना और 5 बच्चे को तुम्हारे बताए बिना बाहर ले जाएगा, है ना? ऐसा ही है ना बेटा. तो जब वॉलंटियर आया और कहा गेट आउट, वो बच्चा और अग्रेसिव हो गया. वो कहता व्हाई शुड आई गेट आउट, यू टेल मी. ही सेड सो मेनी बोर्ड्स, देयर आर रूल्स, यू कांट स्मोक. ही सेड नो, आई विल नॉट फॉलो रूल्स. Is this rule made in heaven? No. This rule you have made on earth. I will not follow any rule which is on earth. I will follow rule which is made in heaven. अच्छा, वॉलंटियर काफी दिनों से था, रोबस्ट था, उसे पता था कि अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में क्या जवाब देना है. उसने देखा ये बच्चा बहुत अग्रेसिव है, अब मुझे इसको जवाब दूसरे तरीके का देना पड़ेगा. उसने कहा लुक, आई हैव सेड you have to get out, so you have only 2 options now. Now you are smelling, so I will not allow you to make any more prayer here. So either you get out or go to the next door. Father is sitting, you bring permission, I have no objection. He said okay, I will go to the father, will bring permission. अच्छा, अगर हमने एज ए टीचर क्लास से निकाला बच्चे को और बच्चे को पता है कि मैं डायरेक्टर के रूम तक जा सकता हूँ, तो बच्चा तो अपनी उसी बॉडी लैंग्वेज में एग्रेशन के साथ जाता है ना डायरेक्टर रूम में, बिना परमिशन लिए.
डायरेक्टर प्रिंसिपल साहब क्या कर रहे हैं, कुछ पूछे बिना सर, तो वो वैसे ही गया फादर। फादर ने देखा ये कौन नॉटी बच्चा है, बिना पूछे पाछे यहाँ चला आया और पूछा यस टेल मी फादर कैन आई स्मोक व्हाइल मेकिंग प्रेयर। फादर ने उससे ज्यादा एग्रेशन और बोल्ड आवाज में कहा नो दैट्स नॉट अलाउड, गेट आउट फ्रॉम हियर। अच्छा, अब बच्चे को याद आ गया कि सर ने क्लास में, पेरेंट्स ने बताया है आर्गुमेंट टिल द स्टेज ऑफ आर्गुमेंट इज ओके, बट एक स्टेज के बाद आर्गुमेंट मत करना। उसको लगा अब ये गार्ड बुलाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड, और मुझे बाहर फिरवा देंगे। So he came with the same aggression, told to his friends, father didn't appreciate, I have not got permission, let's go out from this church and next time onwards we'll ensure from our school no one will come in this church for prayer. वो दूसरा बच्चा जो उसे बिगिनिंग से पॉजिटिव था और कह रहा था बेटा मत स्मोक करो, मत स्मोक करो, मत स्मोक करो, चलो, उसने कहा नाउ बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन हो चुकी है, लेट मी गो टू द फादर एंड गिविंग परमिशन फॉर ऑल ऑफ अस। मैं तुझे शुरू से ही मना कर रहा था ये मत कर, यहाँ बोर्ड लगे हैं, रूल्स लगे हैं, बट अब इतने ह्यूमिलिएशन के बाद हम बाहर नहीं जाएंगे, फादर को कूल पोलाइट करके परमिशन लेके आएंगे। ही वेंट टू द फादर एंड अब दोनों सेंटेंस देखो, जो पहला बच्चा गया था वो उसने कहा था कैन आई स्मोक व्हाइल मेकिंग प्रेयर। अब जो पॉजिटिव बच्चा जा रहा वो ये कह रहा कि पहले परमिशन लिया, आराम से गया, फादर मे आई सिट, या प्लीज सिट डाउन। अब फिर उसको पीछे फादर को, फादर एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है फादर, यार टेल मी व्हाट्स योर प्रॉब्लम। एंड देन ही आस्क्ड फादर कैन आई मेक प्रेयर व्हाइल स्मोकिंग। Father replied, obviously, every moment of your life you must be busy in prayer, and the most quality time of your life is when you are busy in prayer. And then he replied, Father, one of my friends had a poor habit of smoking. We 5 of us are here since morning making prayer, and now the admin people says that you can't make any more prayer. He has stopped making, stopped smoking, and we are being kicked out, Father, from here. Father replied, no, I can visualize you are great devotees. Go. Be busy in prayer. I will ask volunteer to permit you making prayer here. And that's how he came with permission. And that's how, friends, it is said that कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये हुनर हो तो हर बात सुनी जाती है। Power of good communication and communication. तो ये जो इवेंट्स है, नहीं होने वाला काम आप चेयरमैन सर के पास जाओ, सेक्रेटरी सर के पास जाओ, डायरेक्टर सर के पास जाओ, टीचर के पास जाओ, नॉर्मल डे पे वो नो कहते हैं नहीं डांस नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। हाँ, इवेंट के दिन कहते हैं हाँ होगा, चलो ठीक है जाओ, परमिट किया हमने 3 घंटे तुम्हें करने के लिए। ये भी जो स्किल सेट है वो ऐसे इवेंट का हिस्सा होता है। तो वो कॉलेजेस जो इवेंट नहीं करेंगे उनके बच्चे प्रैक्टिकल स्किल से डिप्राइव रहेंगे हमेशा। And last 2 skill set, one is quality, 4th skill, and the last one is passion. है ना, इवेंट दीजिए, रात के 12 बज जाए तो भी मेरा बच्चा थकता नहीं है, लेकिन अगर पढ़ने को बताइए तो 10 बजे 11 बजे के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर टीचर ने एक लेक्चर लगाया और कहा 2 लेक्चर पढ़ाएंगे, सर मैं सब सर के ऊपर जा रहा, बस क्लास बस, ये सिलेबस में नहीं है, मैं सिलेबस में नहीं है तो आपको क्विक स्टोरी बता देता हूँ। एक पेशेंट डॉक्टर के पास गया, आजकल का जमाना है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, आपको क्या अच्छा लगता है वो पढ़ लीजिए और डिग्री पास कर लीजिए, ऐसा सिस्टम होने वाला है। लेकिन आपको क्या अच्छा लगे इसकी डेफिनेशन आपको बनानी पड़ेगी कि आपको कहां जाना है और क्या क्या चीजें आपको अच्छी लगनी चाहिए। तो क्वालिटी पे बात है, आपके अंदर से एक आवाज आनी चाहिए कि मैं जो भी काम करूं अपने लिए करूं, अपने जजमेंट अपनी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से करूं, अंडर कॉम्पिटेंसी का काम न करूं। दूसरे का बेंचमार्क फॉलो न करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी कॉम्पिटेंसी से कम लेवल का काम भी न करें। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि योर कंटीन्यूअस एफर्ट शुड बी टू ट्रैवल द अनट्रैवल्ड पाथ एंड टू बीट द अनबीटन बेंचमार्क। सो अगर आपको एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से पढ़ के एमबीबीएस एमडी किया, जो समझ में आया वो पढ़ लिया, जो अच्छा लगा, और जो अच्छा लगा वो नहीं पढ़ा। इसलिए मैं इसकी अगली स्किल पैशन बता के खत्म करूंगा अपनी बातें। ये वो डॉक्टर के पास जाता है, वायरल का जमाना है ना, 2 हफ्ते से मुझे भी काफी थ्रोट इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर को बताया डॉक्टर साहब मुझे देखिए साहब कुछ प्रॉब्लम है, 2 हफ्ते से अनकंफर्टेबल हूँ। डॉक्टर साहब ने इधर देखा इधर देखा, ये सब टेस्ट किया और डॉक्टर साहब ने बताया वी हैव गॉट ए मेजर प्रॉब्लम। अच्छा, अगर एक पेशेंट ठीक ठाक हो, नॉर्मल वायरल, और वो जाके डॉक्टर के पास बताए और डॉक्टर कहते हैं मेजर प्रॉब्लम, तो पेशेंट अच्छा होने के लिए ठीक अग्रसर होगा या बीमार हो जाएगा? पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, पेशेंट ने कहा व्हाट हैपेंड डॉक्टर टू मी? तो डॉक्टर ने रिप्लाई किया यू हैव गॉट ए डिजीज फ्रॉम ए चैप्टर व्हिच आई लेफ्ट ऑप्शनल ड्यूरिंग माय स्टडीज एंड डिडंट स्टडी। ऐसे डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे?
तो आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ सिलेबस हमेशा पढ़ना चाहिए, इसलिए उसको कहते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो आपके पास भी कोई कस्टमर नहीं आएगा, एज एन एजुकेटेड पर्सन आप रहेंगे, कहेंगे इन्होंने सब ऑप्शनल छोड़ के आएंगे, पता ही नहीं। तो लास्ट स्किल सेट इज पैशन। तो मैं ये कह रहा था कि अगर ये फेस्ट रात के 12 बजे तक भी चले तो आप थकेंगे नहीं, तो बिकॉज यू ओन इट, you become passionate about it, you never understand it is a duty, it is a delight। इस पैशन के साथ अपनी स्टडीज को लेना, और पैशन की डेफिनेशन आजकल गूगल बाबा का जमाना है, ये सारे आप गूगल पे सर्च करना पैशन किसको कहते हैं। एक बड़े शायर की गजल की 4 पंक्तियां पैशन को डिफाइन करती हैं। आप किसी चीज के बारे में पैशनेट रहें तो जब तक आपका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता, आप न इधर देखते न इधर देखते। घर के लोग कहते हैं कि चाय आ गई तुम्हारी, चाय ठंडी हो जाती, डिनर रखा है तुम्हारा, डिनर ठंडा हो जाता। आप जब तक काम पूरा नहीं करते, किधर भी नहीं देखते, ऐसा पैशन चाहिए कि जब तक मेरा गोल अचीव नहीं होगा। मिलिट्री के लोग, डिफेंस के लोग मौजूद, उनको पूछिए कि वो कैसे पैशनेट होते हैं। What comes in what way before them, they are not bothered about it, they have got only one mission। और इस मिशन को एक्सप्लेन किया है इस पोएट ने कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। दुनिया बहुत बड़ी है, अगर आप दरिया में कश्ती में चलेंगे तो समंदर कहां से देखेंगे। तो पोएट कहता है आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। जब से चला हूं मेरे सफर में, जब से चला हूं मंजिल पे मेरी नजर है, डेस्टिनेशन पे मेरी नजर है। जब से चला हूं मंजिल पे मेरी नजर है, राह में कभी मुड़कर मील का पत्थर नहीं देखा। कब मेरा माइलस्टोन आया मैंने देखा ही नहीं। ऐसा पैशन चाहिए, वो पैशन ऐसे प्रोग्राम में होता है, वो एंड फाइनली मैं इस पे कंक्लूड करूंगा कि ये जो यूथ है हमारी, इस यूथ के पास बहुत इनोवेशन है, बहुत क्रिएटिविटी है। अगर आप व्हाट्सएप के मैसेजेस देखें, इतनी क्रिएटिविटी दिखती है। इस क्रिएटिविटी को ऐसा एक पोएट के जबान में बताया गया कि जो कुछ इम्पॉसिबल था वो सब अब पॉसिबल हो रहा है इस ग्रीन कंप्यूटिंग एंड सस्टेनेबल कंप्यूटिंग एंड ग्रीन मार्केट में। इसलिए कहते हैं ग्रीन मार्केट वो कि ओ 21वीं सदी के मुसाफिर तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है, ओ 21वीं सदी के मुसाफिर तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। पत्थरों पे गुलाब खिलाना है, मुझे तुलसी मिली है बहुत अच्छी, थैंक यू सो मच। पत्थरों पे गुलाब खिलाना है, आंधियों में चिराग जलाना है। इम्पॉसिबल को डिजिटल एनवायरनमेंट में पॉसिबल करके देखना है, और ये कॉम्पिटेंसी हमारे यूथ में, हमारे स्टूडेंट्स में एग्जिस्ट करती है। इसे रियलाइज कीजिए इस तरह के इवेंट के थ्रू जो आपके लिए किया गया। और लास्टली, कोई प्रोग्राम अच्छा या खराब, सक्सेसफुल या फेल, इस पैरामीटर पे नहीं जज किया जाता है कि कितने अच्छे स्पीकर्स आए थे, हाउ गुड द स्पीकर्स वर, हाउ गुड द फूड वाज, हाउ गुड द पीपल वर, हाउ मच and how better the hospitality was provided to me. These are not the parameters to judge the success or failure of the program. Rather, the program will be judged on only one parameter, whether it was successful or not. Okay, was there any takeaway from the program? क्या इस प्रोग्राम अटेंड करने के बाद, क्या इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के बाद मेरे जो लाइफ के काम करने का तरीका था उसमें कोई चेंज हुआ या नहीं। और मैंने आने के बाद आपको चेंज का मैसेज दिया है कि जो लोग कंटिन्यूअस चेंज में बिलीव नहीं करते वो अपने पास कंटिन्यूअस चेंज का बिलीव करें। तो इस नोट पे फिनिश करता हूँ, ये दिया जलाया है, हमेशा इस दिया को जलते रखिएगा। पर्पस ये है इस दिया का कि ये आपको अंधेरे से उजाले की तरफ लाएगा, आपको इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ लाएगा। तो उजाला रोशनी होती है और इग्नोरेंस अंधेरा होता है। तो उजाले अपनी आंखों में महसूस करो, पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ एजुकेशन, उजाले अपनी आंखों में महफूज कर लो। बड़ी दूर तक रात की रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हम भी, किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।